In today's lecture, we will understand the law of priority and how taxonomic synonyms are handled. When one organism has many scientific names, zoological rules helps us choose the oldest valid name as the correct one. This brings naming confusion into clear scientific order. Outlines. Today's lecture has two main parts. First, the law of priority and first divisor principle. Second, synonyms and synonymy. We will learn their rate, significance and types so taxonomic naming becomes clear and systematic. Lecture outcomes. By the end of this lecture, you will be able to define the law of priority, understand synonyms and synonymy, and explain the role of first divisor principle and zoological nomenclature. You will also differentiate between different types of taxonomic synonyms, analyze how synonymy develops during research, and apply naming rules to identify the correct scientific name of an organism with confidence. The law of priority is one of the most important rules in zoological nomenclature. This law states that the earliest properly published scientific name of an organism becomes the valid name. This rule is applied from January 1st, 1758, which is considered the starting point of modern animal taxonomy under the ICZN, International Congress of Zoological Nomenclature. For a scientific name to be accepted, several conditions must be fulfilled. First, the name must be properly published with a description or identifying characters. Secondly, the scientist must follow binomial nomenclature, meaning every organism should have a generic name, genus name, and a specific or species name, like Panthera leo. Another important condition is the availability of the name. Names published after 1930 are accepted only when proper descriptive information is provided. This slide also explains the homonymy rule. If the same scientific name is already used for another organism, the later name becomes invalid. Now look at the example of lion. Different scientists proposed different names for the same animal. According to the law of priority, the oldest correctly published name gets priority and becomes the valid name, while later names become synonyms. So remember this key concept: oldest correctly published name wins. तो लॉ ऑफ priority की वैलिडिटी तो 1 जनवरी 1st 1758 से टू प्रेजेंट है। दूसरी बात यह है कि ये लॉ कहती है कि जो नाम सबसे पहले साइंटिफिकली या साइंटिफिक प्रॉपर्ली वो पब्लिश हुआ होगा वो वैलिड नेम होगा, उसके बाद जितने भी पब्लिश हुए होंगे वो इनवैलिड। कंडीशंस क्या है कि एक तो जब पब्लिकेशन हो रही हो, वो जो नेम दिया जा रहा हो उसको एक तो प्रॉपरली पब्लिश किया गया हो, जब जिस वक्त नाम दिया जा रहा हो उसमें प्रॉपर जो बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स है वो सारे अप्लाई की गई हो, और उस नेम की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए कि आया वो नेम अवेलेबल है या नहीं है, क्या वो नेम ऑलरेडी तो यूज नहीं हुआ है नोमेनक्लेचर, और होमोनिमी की रूल भी उसमें अप्लाई होनी चाहिए कि ये नाम कहीं पहले तो यूज नहीं हो चुका है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लाइन की एग्जाम्पल ले ले तो लिनायस ने 1758 में उसको फेलिस लियो का नाम दिया, श्रिबर ने 1775 में उसको लियो फेरोक्स का नाम दिया, और कोवियर ने 1828 में पांतरा लियो का नाम दिया। तो अब जब इसको देखा गया, अब देखिए हमने लॉ ऑफ प्रायोरिटी के मुताबिक सबसे ओल्डेस्ट नेम जो है वो लिनायस का था और वो वैलिड नाम तस्वुर होगा। सो ओल्डेस्ट प्रॉपरली पब्लिश्ड नेम जो कि 1758 में था वो वैलिड हो जाएगा, तो ये पांतरा लियो बन जाएगा। और इसमें ये फेलिस इसलिए हटाया गया क्योंकि फेलिस जो है वो छोटे कैट्स या जो डोमेस्टिक कैट्स वगैरह का जिनस है, उससे लॉइन को निकाल के पांतरा में डाल दिया गया बिग कैट्स में, तो इसको पांतरा में डाला गया और फिर ये पांतरा लियो बन गया। सो द ओल्डेस्ट पब्लिश्ड नेम गेट्स द प्रायोरिटी, और जो बाकी दो हैं वो सिनोनिम्स बन जाएंगे और इसको लिटरेचर से हटा दिया जाएगा। फर्स्ट रिवाइजर प्रिंसिपल. This principle is used when two or more scientific names have equal priority, usually because they were published on the same date or in the same publication. So in such situations, the normal law of priority cannot
decide which name should be accepted. So a later scientist carefully studies the names and selects one name as the valid name. This scientist is called first reviser. Now look at the first example. Two scientists described the same animal on the same date using different names. Phyllis Leo Ferox and Phyllis Leo Atrox. Later, another scientist selected Phyllis Leo Ferox as the accepted name. Therefore, it became the valid name while the other name became a junior synonym. This principle also applies to different spellings of the same scientific names. And look at the example 2. If an author originally publishes two spellings, the first reviser choose the correct spelling that will be officially accepted. The main purpose of this principle is to maintain stability, clarity, and uniformity in zoological nomenclature. सो फर्स्ट रिवाइजर प्रिंसिपल और फर्स्ट रिवाइजर प्रिंसिपल कौन है? अब एक तो ये कानून है, दूसरा ये फर्स्ट रिवाइजर एक शख्स होता है, एक साइंटिस्ट होता है जिसको फुल इख्तियार दिया जाता है कि वो इस चीज को स्टडी करें और अपने बेस्ट नॉलेज के मुताबिक विदाउट एनी प्रेशर किसी भी एक नाम को चूज करे जो कि वैलिड है। अब फॉर एग्जांपल आप इस एग्जांपल में देखें कि एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट ए और एक साइंटिस्ट बी, दोनों ने फिलिस लियो फेरोक्स नाम दिया, 1 जून 1850 को पब्लिश किया और सेम डेट को 1 जून 1850 को फिलिस लियो ट्रॉक्स भी दूसरे साइंटिस्ट ने दिया। अब ये चूंकि मसला बन गया तो अब इसमें तो लॉ ऑफ प्रियॉरिटी को हम नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि यहाँ पर तो एक ही डेट, एक ही पब्लिकेशन डेट है, एक ही पब्लिकेशन में आया है। तो डॉक्टर स्मिथ फॉर एग्जांपल, डॉक्टर स्मिथ जो है 1862 में ये फर्स्ट रिवाइजर है, तो ये स्टडी करेगा इन दोनों को और अगर इसने जो भी चूज किया, इस केस में डॉक्टर स्मिथ जो कि फर्स्ट रिवाइजर है उसने फिलिस लियो फेरोक्स को वैलिड नेम करार दिया। तो इस वजह से जो फिलिस लियो ऑट्रिक्स था वो जूनियर सिनोनिम हो गया और फिलिस लियो फेरोक्स जो है वो सीनियर होमोनिम सिनोनिम बन जाए, नेम बन जाएगा या सिनोनिम बन जाएगा। अब दूसरे एग्जांपल में आप देखिए कि अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स है, फॉर एग्जांपल सेम डेट को 1840 को पब्लिकेशन हुई जिसमें पांथेरा पार्डस विद डीयूएस और इसी तरह पांथेरा पार्डोस डीओएस से पब्लिश हुआ। तो अब फर्स्ट रिवाइजर इनमें करेक्ट जो स्पेलिंग होगी उसको चूज करेगा, लाइक इन दिस केस पांथेरा पार्डस डीयूएस वाले को एक्सेप्ट कर दिया गया, जबकि डोस डीओएस वाला जो था वो जूनियर सिनोनिम बन जाएगा और उसको हटा दिया जाएगा। Synonyms and synonymy, two very important concepts in taxonomy and zoological nomenclature. First, remember this simple idea. When the same organism is given different scientific names, those names are called synonyms. For example, different scientists give different names to the lion, such as Felis leo, Leopharex, and Panthera leo. These are all names connected with the same animal. Now, what is synonymy? Synonymy is the complete organized list of all scientific names used for a taxon, along with their authors, date of publication, and references. This information helps taxonomists trace the naming history of an organism. This slide also shows the important details included in synonymy, such as original scientific name, author's name, publication year, reference source, and type locality. Now, the most important question is how do we select the correct name when many names exist? Here we apply the law of priority. According to this rule, the oldest properly published name becomes the valid name and is called the senior synonym. The later names are called junior synonyms and they are not accepted as the valid scientific names. So remember this key concept. Synonyms are different names for the same taxon, while synonymy is the complete historical list of those names. Synonymy और synonyms क्या है? देखो, synonyms वो नाम है जो
مختلف سائنٹسٹ نے کسی ایک ٹیکسون کو، لائک ان دس کیس لائن کو 3 ڈفرنٹ نام دیے گئے ہیں، تو ایک ٹیکسون کے لیے 3 مختلف نام، یہ تو ہو گئی سینونیمز. اور سینونیمی کیا ہے؟ یہ جو آتر لسٹ ہے، جو نام دیے گئے ہیں، وہ نام کس سال میں وہ پبلش ہو گئے ہیں، ان کا ریفرنس کیا ہے، اور ان کی لوکیلٹی کیا ہے، اور اس کا سٹیٹس وغیرہ، یہ سب کچھ پورا لسٹ جو ہے اس کو سینونیمی کہتے ہیں. اب اگر اس طرح کی کنڈیشن آتی ہے جس میں ایک ٹیکسون کے لیے، ان دس کیس لائن کے لیے 3 ڈفرنٹ نام ہیں، تو ہم ان میں سے کون سا نام چوز کریں گے؟ اور یہ ہم نے بایولوجیکل کلاسیفیکیشن میں بار بار اسٹڈی کیا، اور نیمنگ میں کہ نیم ایک ہی ہوگا، ایک ویلڈ نیم ہوگا. اب دیکھیں، ہم اس کو شیر کہتے ہیں، انگلش میں اس کو لائن کہتے ہیں، عربی میں اس کو لیو کہتے ہیں. تو اب مختلف زمانوں میں شیر کے لیے مختلف نام ہیں، لیکن ہم کیوں سائنٹیفک نیم یوز کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ یونیورسل ہو، اسٹیبل ہو، ایک ہو، اور پوری دنیا میں پہچانا جائے. لیکن اگر اس طرح کی کنڈیشن آ جائے کہ یہاں پر بھی ایسے 3 نام آ جائے، پھر تو وہ جو اسٹیبلٹی، وہ نومنکلیچر کا جو روح تھی، وہ تو ختم ہو گئی. تو اس لیے جب یہ کنڈیشن آتی ہے، جب سینونیمی آتی ہے، سینونیمز آتے ہیں، تو اس وقت ہم لا آف پریورٹی کی طرف جائیں گے. اور لا آف پریورٹی کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ جو ویلڈ، جو نیم سب سے پہلے پراپرلی پبلش ہوا ہوگا، اس میں تمام رولز اپلائی کیے گئے ہوں گے نومنکلیچر کے، تو وہ سب سے زیادہ بیٹر ہوگا، وہ ویلڈ نیم ہوگا، اور اس کو ہم سینئر سینونیم کہیں گے. اس کیس میں آپ فیلس لیو، جو کہ بعد میں پانترا لیو بنا، وہ سینئر سینونیم کہلایا گیا، اور یہ ویلڈ نیم تھا. کیوں؟ کیونکہ اس میں نومنکلیچر کے رولز بھی اپلائی کیے گئے، اور یہ سب سے پہلے پبلش بھی ہوا. اور جو باقی 2 رہ گئے، تو وہ جونیئر سینونیم بن گئے، اور ان کو لٹریچر سے ہٹا دیا جائے گا، اور ان کو کبھی بھی دوبارہ ریٹریو نہیں کیا جائے گا. تو جو فرسٹ نیم ویلڈ تھا، جو کہ پہلے پبلش ہوا اور اس میں تمام رولز اپلائی ہو گئے تھے، وہ پہلے جو پبلش ہوا وہی ویلڈ نیم ہوگا. تو سینونیمی یا سینونیمز کا مطلب ہے وہ مختلف نام جو کہ کسی ایک ٹیکسون کے لیے رکھے گئے ہو، اور سینونیمی کا مطلب ہے وہ تمام پوری ہسٹری اس کے بارے میں کہ وہ کون کون سے نام تھے، کس کس سائنٹسٹ نے دیے، اور کب کب دیے، اس کو سینونیمی کہتے ہیں. The rate of synonymy means the percentage of scientific names that later become synonyms instead of accepted valid names. In easy words, it shows how much naming confusion exists in a particular animal group. The rate of synonymy is not the same in all groups. Some groups like insects, fishes, and mollusks may have a very high rate of synonymy, sometimes even exceeding 50%. On the other hand, well-studied groups such as many mammals usually show a lower rate of synonymy. But the question arises, why does synonymy occur? One major reason is that the same species may be described independently by different scientists working in different regions of the world. Sometimes old descriptions are incomplete or unclear. Another case, male, females, juveniles, or seasonal forms are mistakenly identified as separate species. For example, common crow, as shown on the slide. Different scientists gave different names to the same species in the past. Later, taxonomic studies showed that these names referred to the same organisms. According to the law of priority, the oldest properly published name becomes the valid name, while others become junior synonyms. Taxonomists estimate the rate of synonymy using statistical models and taxonomic revisions. A high rate of synonymy indicates greater confusion in the naming and highlights the need for careful scientific revision. So remember this important idea. Many names may exist for one species, but only one accepted valid name remains after taxonomic revision. تو ریٹ آف سینونیمی کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاص گروپ میں کتنی زیادہ سینونیمز موجود ہیں. اب میں آپ کو بار بار یہ چیز بتا رہا ہوں کہ جن اینیمل میں ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے، اڈاپٹیو ریڈیشن بہت زیادہ ہوئے ہیں، لیکن انسیکٹس اینڈ فشز اینڈ ایون ان برڈس، یہ نمبر اور ملسک میں ایون بہت زیادہ ہو سکتا ہے، اور سم ٹائم میں 50% سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے.
और दुनिया में भी बहुत जगहों पर फैले हुए हैं। अब इसके बजाय अगर आप मैमल्स को देखें तो मैमल्स में ये परसेंटेज या रेट ऑफ सिनोनिमी बहुत कम है, क्योंकि वो वेल स्टडीड हो गए हैं। और सम टाइम ये भी हो सकता है कि दुनिया में चूंकि सारे साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में एक साइंटिस्ट स्टडी कर रहा है, एक एशिया में स्टडी कर रहा है, एक अफ्रीका में, एक यूरोप में, एक अमेरिका में। और इस एग्जाम्पल अगर आप देखें कॉमन क्रो की, तो इसको बहुत सारे डिफरेंट नाम दिए गए और इनको लाइक डिफरेंट स्पीशीज तस्वर किया गया। लेकिन जब लेटर ऑन प्रॉपर स्टडी हुई तो पता चला कि ये तो डिफरेंट नाम दिए गए हैं एक ही स्पीशी को, क्रो तो वही है लेकिन नाम डिफरेंट दिए गए हैं। तो फिर यहाँ पर हम लॉ ऑफ प्रियोरिटी की तरफ जाते हैं, और जो सबसे पुराना ओल्डेस्ट वैलिड नेम होगा, जो प्रॉपरली पब्लिश पहले हुआ होगा, वही वैलिड नेम होगा। बाकी सारे जूनियर होमोनिम्स सिनोनिम्स जो है वो बन जाएंगे। तो ये है कि रेट ऑफ सिनोनिमी कुछ ग्रुप्स में बहुत ज्यादा होगी और कुछ ग्रुप्स में बहुत कम होगी। Synonymy is extremely important in taxonomy because it connects all scientific names that have been used for the same organism. Remember, one species may receive different names from different scientists at different times. A synonymy list helps us collect and organize all those names together. The first major importance of synonymy is that it helps researchers recover old scientific literature published under different names. For example, if older studies on the line were published under Phyllis Leo and modern studies use Panthera Leo, synonymy helps scientists understand that both names refer to the same species. Second, synonymy helps taxonomists select the valid scientific name by applying the law of priority. Usually, the oldest available properly published name becomes the accepted valid name called the senior synonym. Another important role of synonymy is that it prevents confusion caused by multiple names. This improves stability, uniformity, and accurate scientific communication worldwide. Synonymy also reveals the taxonomic history of a species. It shows how scientific understanding and classification changed over time. Finally, synonymy supports accurate identification, research, conservation work, and biodiversity studies. So remember this key idea: synonymy works like a history card of species, connecting many past names to one true biological identity. तो सिनोनिमी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको किसी एनिमल की पूरी हिस्ट्री एक कार्ड के शक्ल में रख के देता है। लाइक इस एग्जांपल में आप देखिए कि पांथरा लियो को किस तरह वैलिड नेम करार दिया गया और बाकियों को रिजेक्ट कर दिया गया। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सिनोनिमी हमें जो टेक्सोनोमिक लिटरेचर है उसमें सारी जितनी भी कंफ्यूजन है वो खत्म करके हमें क्लियरिटी देता है। In taxonomy, synonymy is mainly divided into two major types: subjective synonymy and objective synonymy. Subjective synonymy, this type is based on the opinion or judgment of taxonomists rather than absolute proof. Different scientists may study the same organisms and interpret them differently. As a result, they may give different names to what later turns out to be the same species. Subjective synonymy usually happens because of incomplete knowledge, poor original descriptions, geographical variation, or differences between males, females, juveniles, and adults. For example, different scientists once described the common crow under different names, such as Corvus splendens, Corvus culminatus, and Corvus schleiersi. Later studies showed that these names refer to the same species. Therefore, the latter name becomes subjective synonym. Now, objective synonymy. Objective synonymy is based on clear factual evidence, especially when two different names are based on the same type specimen. Unlike subjective synonymy, objective synonymy is not based on opinion. It is considered more stable and permanent. For example, if two scientists unknowingly give
different names to the exact same preserved specimen, those names automatically become objective synonyms. So remember this key concept: subjective synonymy is based on scientific judgment and may change with new research. Objective synonymy is based on direct evidence and usually remain permanent. In taxonomy, there are two main types of synonymy. One is subjective synonymy and the other is objective synonymy. Subjective synonymy is based on the opinion, interpretation, or judgment of taxonomists rather than absolute proof. In this case, different scientists may study organisms differently and decide whether they belong to the same species or different species. This type of synonymy usually happens because of incomplete knowledge, poor original descriptions, geographical variations, or differences in age, sex, or seasonal forms. For example, male and female of the same species may look very different, so early scientists may mistakenly describe them as separate species. Now look at the example of the common crow. Different scientists give different scientific names such as Corvus splendens, Corvus culminatus, and Corvus chilidici. Later researchers showed that all these names actually refers to the same species. Therefore, Corvus splendens became the accepted valid name, while the other names became subjective synonyms. An important point to remember is that subjective synonymy can change when new information or better scientific evidences become available. So remember this key concept: subjective synonymy is based on taxonomist judgments and may change with future research. The second type is objective synonymy. Objective synonymy occurs when two or more scientific names are based on the same type specimen or the same name bearing specimen. Unlike subjective synonymy, this type is based on facts and direct evidence, not on personal opinions, because both names are connected to the exact same specimen. These names are automatically treated as synonyms. Objective synonymy is also known as nomenclatural synonymy or obligate synonymy or absolute synonymy. Now look at the example shown on the slide. Two different scientists named Turbo Magnus and Turbo Maxima were independently given to the same preserved marine snail specimen. Later examination showed that both names were based on the same holotype specimen, numbered USNM 12345. So therefore, these names become objective synonyms. An important feature of objective synonym is that it usually is permanent and does not depend on changing scientific opinion. This type of synonymy helps maintain stability, clarity, and accuracy in zoological nomenclature. So remember this key concept: subjective synonymy is based on judgment, but objective synonymy is based on the same type specimen and factual evidence. Thank you everyone for attending today's lecture on law of priority and synonymy. I hope this session helped you clearly understand the important concepts of scientific naming, synonyms, subjective synonymy, and objective synonymy, and zoological nomenclature. If you found this lecture helpful, please like, subscribe, and share the channel with your classmates to support more educational contents in systematic zoology. And remember, learning taxonomy becomes easier when we connect concepts with real examples and scientific reasoning. If you still have any question or confusion, feel free to ask them in the comment section below. Thank you and see you in the next lecture.